वनस्पति विज्ञान विभाग गार्गी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अश्वगंधा यानी विथेनिया सोमनिफेरा के पौधों की उपलब्धता बढ़ाने तथा महिला स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण के लिए इसकी उपयोगिता के बारे में सूचना प्रसारित करने के लिए अभियान परियोजना के तहत अश्वगंधा एक स्वास्थ्यवर्धक खेती से फार्मेसी तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस कैंपेन के अंतर्गत अश्वगंधा पौधों का वितरण तथा आईईसी गतिविधियां जैसे ब्रोशर, प्रिंट मीडिया, वृत्तचित्र से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आयोजन किया। इसके सफल आयोजन के लिए मैं गार्गी कॉलेज के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर गर्विता सिंह एवं प्राचार्य प्रोफेसर संगीता भाटिया और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। On behalf of Gargi College, I would like to thank the Ministry of Ayush, especially the National Medicinal Plants Board and the CEO, Dr. Dadish, for providing us with the research grant for undertaking a work on Ashwagandha, promoting awareness and especially to do with empowerment. And we undertake We're a Women's College, and the grant specifically to Dr. Garvita Singh and Dr. Renu Soni from the Department of Botany have been able to establish a certain kind of awareness, a popularity of the medicinal plants, Ashwagandha. When we look at indigenous plants of medicines which are available in our environment itself, it helps us to understand that rather than buying expensive medicines on a daily basis, we can utilize Ashwagandha to promote our own health. When we take charge of our health, we are also empowered. So I am extremely grateful to the Ministry of Ayush to say this, that we are empowered women because of your grant, and we look forward to your support going forward. Thank you so much. Namaskar. Ashwagandha or Withania somnifera, an Ayurvedic herb, also known as Indian ginseng or Indian winter cherry, is a natural herb which roots and leaves are used to make a number of medicines. However, it is advisable to consult an expert before consuming ashwagandha, especially if any other treatment or medication is being taken. Gargi College has been awarded a project grant on the theme Ashwagandha as a health promoter to be a part of our nationwide national campaign. Dr. Garvita Singh, PI, and Dr. Renu Soni, co-PI of the Department of Botany, Gargi College have been approved by the National Medicinal Plants Board, NMPB, Ministry of Ayush, New Delhi in the year of 2024 and 25 to increase the availability of Ashwagandha, Withania somnifera plants and disseminate its utility for women health and empowerment. In this campaign, Honorable Dr. Saurabh Sharma, Senior Consultant, Maharishi Ayurveda Hospital, New Delhi, not only supported us in our efforts but also participated in our project as an Ayurvedic consultant. नमस्कार। तो अश्वगंधा एक रसायन है। रसायन वे सभी हर्ब्स, वे सभी सारी चीजें हैं जो कि हमारी बॉडी में रसादी धातुओं की पुष्टि करती हैं। हर तरह से हर सिस्टम पर काम करता है। बहुत अच्छा है आपके ब्रेन के लिए, ये नींद बहुत अच्छी लाता है। इसी तरह के स्ट्रेस और एंजाइटी में बहुत अच्छा काम करता है। बहुत अच्छा है आपके हार्ट के लिए, यानी किसी भी तरह का हार्ट रिलेटेड बीमारी है या ब्लड प्रेशर रहता है उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। ब्रेन रिलैक्सेंट होने के साथ साथ मेमोरी भी बढ़ाता है। बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली फीमेल्स के अंदर जब आपको ऑस्टियोपोरोसिस होता है या ऑस्टियोपीनिया होता है, किसी भी तरह की मीनोपॉज या मीनार्की की कोई भी स्टेजेस होती है, इनफर्टिलिटी है या कोई पीरियड्स में किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है, पेन होता है, न्यूरोलॉजिकल वीकनेस के लिए भी अश्वगंधा बहुत अच्छा है। अश्वगंधा को हम बहुत ही अच्छा एडेप्टोजेनिक कहते हैं। शतावरी हो, मुलाठी हो, किसी के साथ मिलाकर दे दें तो अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। एक ऐसा हर्ब, ये एक ऐसा प्लांट है जो कि सर से लेकर पांव तक सारी ही बीमारियों में अच्छा काम करता है और हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथनिंग एजेंट है। The ultimate objective of this nationwide campaign is to distribute ashwagandha plants in various surrounding areas of Delhi, as well as provide training on cultivation techniques and to encourage and create awareness about the benefits of this wonderful herb. To spread awareness about ashwagandha, we have made a simple effort to spread awareness from house to house through posters and pamphlets under print media. Through this campaign, ashwagandha plants
were distributed to the students, teachers and non-teachers in various educational institutions like Kendriya Vidyalaya, Saddiq Nagar, Mata Gujri Public School, Kailash Colony, Kautilya Government Sarvodaya Co-Education School, Chirag Enclave, Gargi College Mahavidyalaya, Kamla Nehru Mahavidyalaya, etc. through various programs. Apart from this, plant distribution campaigns were also conducted in various RWA colonies of South Delhi. Police Station Staff GK1 in the cycling marathon competition organized by Fortis, and awareness was spread in public awareness. राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत वर्तमान में अश्वगंधा कैंपेन का प्रमोशन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के थ्रू कर रहे हैं। इसके पहले अश्वगंधा के पहले गिलोय कैंपेन, आंवला कैंपेन, मोरिंगा कैंपेन का सफलतापूर्वक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत इम्प्लीमेंट किया गया और यह कैंपेन हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम की एक मैंडेट है, जिसमें हम मेडिसिनल प्लांट्स का प्रमोशन करते हैं और उसमें एक प्रजाति को सिलेक्ट किया जाता है और उसी प्रजाति के लिए पूरे भारतवर्ष में अनुदान प्रदान किया जाता है, जिसमें उसका प्रमोशन भी हो, उसके साथ साथ संरक्षण भी किया जाए। धन्यवाद। Gargi College successfully organized a one-day national conference on Ashwagandha, a health promoter from field to pharmacy, on 18th October 2024 under the aegis of Research Development Cell (RDC). The chief guest of the conference was Professor Mahesh Dadej, CEO, National Medicinal Plants Board, Ministry of Ayush, Government of India, and the guest of honor was Professor Deenbandhu Sahu, Department of Botany, University of Delhi, Dr. Sangeeta Bhatia, Principal of Gargi College, and Professor Alok Sharma, Chairman of Governing Body and Chief Patron of the program, were felicitated them. Dr. Bhatia and Professor Sharma expressed their gratitude to the guests and speakers of the technical session for their invaluable presence. Ashwagandha and other medicinal plants were distributed to all the participants. Apart from distribution and awareness of Ashwagandha plants, we have also organized various activities like poster making and essay writing competitions on Ashwagandha topic at school, college and university level to spread awareness among the young generation. Under the nationwide campaign to further popularize the use and benefits of Ashwagandha plant, various activities or programs will be organized throughout the society and free distribution of Ashwagandha plants will be done so that people can plant it and experience its benefits.
As a part of this national campaign, we are grateful to NMPB, Ministry of Ayush, who have entrusted us with the task of distributing ashwagandha plants to disseminate information about its usefulness. बेटा क्या है आप लोगों के पास ये अश्वगंधा प्लांट कहाँ से मिला? ओके, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? मेडिसिन बनती हैं, वेरी गुड। The campaign to distribute saplings and disseminate information on women's health and empowerment is a project that is funded by the NMPB Ayush Ministry, Government of India. We have some feedback from students, teachers and non-teaching staff. So in Ashwagandha conference, we got to know about many medicinal values of Ashwagandha, as well as we got saplings of Ashwagandha distributed. We got to know some really important benefits about the plant that we had not known earlier, and its benefits, how we can intake it. From this session, I came to know about the stress relieving properties of Ashwagandha. After getting a sapling from the organizers, I started taking leaves of Ashwagandha in boiling water regularly. सोमनीफेरा इज ए मेडिसिनल प्लांट, ये बहुत फायदा करता है, ये दवाइयों में भी मिक्स होता है, तो इससे हमारे स्ट्रेस में और हमारी मेंटल उसमें भी बहुत फायदा करता है। जब से हमारे यहाँ अब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तो हमें काफी जानकारी मिली है और इसी को हम लोग आगे काफी जगह प्रमोट कर रहे हैं। अश्वगंधा कैंपेन से हमें अश्वगंधा के कई सारी मेडिसिनल वैल्यूज के बारे में पता चले। So after organizing this conference, I find that it is a very useful plant. And As we conclude, I, Dr. Garvita Singh, PI of this particular project on Ashwagandha, I, Dr. Renu Soni, co-PI of this project, we are very much thankful to National Medicinal Plant Board, Ayush Ministry, for granting us this project. and we are also thankful to our principal ma'am, Professor Sangeeta Bhatia, for her unwavering support and guidance throughout this project. Thank you, everyone. Thank you.